वेलकम टू स्मार्ट प्रेप विद प्रिया। आज का हमारा टॉपिक है द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द 5 मस्ट नो वर्ड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Before we move ahead and talk about the preamble, let's talk about the Constitution of India. The Constitution of India is basically the fundamental law of the land. It's the fundamental law of the land, and preamble is nothing but the introduction to that fundamental law of the land. So, the preamble is introduction, and in other words, we can also call it as preface. According to an eminent jurist, N.A. Palkhiwala, he called it as the identity card to the Constitution. इन सब चीज़ों से एक बात तो क्लियर है कि प्रियम्बल एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि किसी चीज़ का समरी बता रही है, एसेंस बता रही है, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। पर ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे, जो कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा ले किया गया था इन फ्रंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ फंडामेंटल और फंडामेंटल आइडिया और उसकी फिलॉसफी को दर्शाता है। And that is why the preamble of the Constitution becomes so important. Here we can see the important words such as we the people of India that we'll discuss further, sovereignty, socialist, secular, words like republic, justice, liberty, equality, and the date when it was adopted. But preamble in itself is not a new concept. It first emerged with USA. पहला constitution जिसने preamble को use करा as an introduction was United States of America. Here on this photo you can see this is the preamble of United States of America. Here also we can see we the people. So here let's read it out loud. Why reading out loud? So that we can first, you need to understand the Constitution, to learn about Constitution, you really need to know the preamble by heart. Okay, so first once, the Constitution of India Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens, what? Justice of social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote them among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Here, by reading out loud, we get to know a lot of things. पहली चीज़ जो हमें प्रियम्बल से पता चलती है वो है इसकी सोर्स ऑफ अथॉरिटी। कहाँ से अथॉरिटी मिल रही है कॉन्स्टिट्यूशन को, इसके बारे में हमें पता चलता है पहली चीज़। और कहाँ से मिल रही है वो अथॉरिटी? वी द पीपल ऑफ इंडिया से। कहाँ से मिल रही है? लोगों से वो अथॉरिटी मिल रही है। दूसरी चीज़ जो हमें पता चल रही है ये सब रीड कर दैट इज़ द नेचर ऑफ स्टेट, ऑफ आर स्टेट। हमारी इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है, कैसी है वो है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। और अगले जो हमें वर्ड्स दिख रहे हैं उससे हमें पता चलता है क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, जो कि है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। And one of the most important thing that we come to know is by this last paragraph where it says, when do we adopt our constitution? It is on 26th November 1949. We give to ourselves, adopt, enact and give to ourselves this constitution. I hope this is clear. Let's move on and let's talk about the 5 must know words in the preamble. The first word the first word that we will discuss is, first word is sovereignty. The second word we are going to discuss is socialism, socialist. Third word is secular. Here we can see various religion, how it is related to secularism, we will see. Fourth word will be democratic. We can see over here person voting. And lastly, but not the least,
we have republic. Okay, so let's get started. The first word is sovereign. Now, what does it mean? It means that India is neither a dependency on someone and nor it is a dominion status. Dominion status means it is not a part of any empire. It is, for example, it is not a part of British Empire. It is its own. It means that it is independent, in simple words. We can make all our decisions on our own boss. We are our own boss. Okay, so either they are internal decisions relating to internal affairs or external affairs. Both the decisions we can take by our own. We don't need anybody. No authority is there above us. Okay, it means that the most important thing to know, if we are sovereign, it means first we have two things. We can acquire foreign territory, and second, we can cede in favor of a foreign territory. For example, this is India, so we can acquire some other foreign state into India, or we can give our part to somebody foreign state. So this is what being sovereign means. We are our own boss, and we can make our own decisions. Okay, we are not a dependency. So this is what sovereignty means. Let's move on and let's talk about the next word that we have, that is socialist. Now, before moving on and talking about what does it really mean, we need to understand that originally it was not present in the constitution. Originally it was not there. It was added by the 42nd Amendment Act. 42nd Amendment Act 1976. And the other words which were added were secular and integrity. Okay, but beside what else were added, let's move on. Let's get back to what socialist means. Okay, so socialist, the word was added by 42nd Amendment Act, right? And it does not mean that it was not there before in the constitution. It was there implicitly in the form of DPSPs. So DPSPs are the directive principles of state policies, and they tell you how we are socialistic. But the Indian brand of socialism that we follow is democratic socialism. So socialism, we have two kinds. We have communist and we have democratic. Okay? So in communist, we see, what do we see is, we see abolish of what? Private property, and complete nationalization of all the resources, complete nationalization, and no private property. However, in the Indian brand of socialism, we have democratic socialism, wherein here we can see in the photograph, we have India's mixed economy. So this means democratic means having a mixed economy, a balance between public and the private, and no abolishment of private property. This is the important thing over here. Here it also aims at, what aims at? This democratic kind of socialism aims at, first it aims at removing poverty. So यहाँ पे we can see poor kids, right? So poverty को खत्म करना is the main aim. The aim is to remove ignorance. ठीक है, second point. Third, the other aim is to remove diseases. And lastly, inequality of opportunity. This is very important, and the aims which I have mentioned, this was mentioned by Supreme Court also regarding our democratic socialism. Supreme Court. Okay. So this is what you mean by democratic socialism. The word socialist actually entails this word, democratic socialism. Okay. Moving on, let's move on and talk about the next word, the third word that we have in the preamble. The must-know word is the word called secular. Alright, so secular, again, we have already discussed, it was added by 42nd Amendment Act in 1976. This amendment is known as the mini constitution, okay? Why? Because secular का मतलब क्या होता है? देखो,
सेक्युलर का मतलब होता है कि जो स्टेट है वो सारे रिलीजन्स को क्या करे, इक्वली रिस्पेक्ट करे, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो हिंदुज़म हो, चाहे वो सिखिज़म हो, चाहे वो इस्लाम हो, कोई भी सारे जितने भी रिलीजन्स यू कैन सी ओवर हियर, सारे एक्सेट्रा सारे रिलीजन्स को क्या करे, स्टेट रिस्पेक्ट करे इक्वली एंड डज नॉट अपहोल्ड एनी रिलीजन एज स्टेट रिलीजन। तो यहाँ के दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं कि पहला, ऑल रिलीजन्स इक्वल, ओके, ऑल रिलीजन्स इक्वल, and secondly that no state religion, सिंपल भाषा में यही है इसका मतलब। ऑलराइट, लेकिन व्हाट इज द इंडियन ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म? जैसे हमने भी पढ़ा कि सोशलिज्म की एक इंडियन ब्रांड है, वैसे ही सेक्युलरिज्म की भी क्या है, एक इंडियन ब्रांड है। हमारा जो सेक्युलर वो है ब्रांड है, वो होता है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। अनंत कोई फिर इसका मतलब कोई नेगेटिव भी होता है, बिल्कुल होता है नेगेटिव, जिसे हम जो वेस्टर्न फॉर्म है, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है। क्या डिफरेंस है? देखो, पॉजिटिव का सिंपल सा फंडा ये है कि भाई स्टेट जो है वो सबको सपोर्ट करता है, सारे रिलीजन्स को सपोर्ट करता है, ठीक है, इक्वली सारे रिलीजन को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, सिंपल। लेकिन वेस्टर्न में कुछ डिफरेंट है। वेस्टर्न में अगर ये स्टेट है हमारी और ये रिलीजन है, तो स्टेट और रिलीजन दोनों ही क्या है, सेपरेटेड है। क्या है? सेपरेशन है दोनों के बीच में, क्या है, सेपरेशन है। वहीं दूसरी ओर जो हमारा ब्रांड है उसमें क्या है, ये क्या है, स्टेट है, ये बीच में देख सकते हो, एस लिख दिया मैंने, स्टेट है, उससे ये सारे रिलीजन क्या है, इक्वी डिस्टेंट पे हैं। क्या है, इक्वी डिस्टेंट पे है। इट मीन्स दैट दे आर व्हाट, दे आर इक्वली सपोर्टेड बाय द स्टेट। पर यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं है, यहाँ पे सेपरेशन है। क्या है, सेपरेशन। I hope this is clear that we have what is secularism means, what is positive secularism. Our brand is positive, right? Positive concept of secularism. However, let's talk about what we said कि 42nd अमेंडमेंट में तो ऐड हुआ सेक्युलर वर्ड। क्या इससे पहले हमारे सेक्युलर कोई नेचर ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में? बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी इम्प्लिसिट वे में हमारे पास आर्टिकल्स वी कैन सी, आर्टिकल्स 25 टू आर्टिकल 28 विच आर फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। दिस आर फ्रीडम ऑफ रिलीजन। Okay, so the word secular means respecting all the religions equally and not upholding any state religion. I hope this word secular is clear, and let's move on to the next word, that is democratic. Democratic का simple meaning है supreme power to the people, supreme power by the people. Right, so the possession of, so they possess the supreme power. Who possess? People. These are people, right? These are people. They all possess what? They all possess power, the supreme power in a democratic state. Now this democracy, there are two kinds. Okay, so we have indirect and direct. India mein we have the indirect kind, which is called as representative parliamentary democracy. What is it called? Representative parliamentary democracy is democracy, right? जहाँ पर क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है, it is responsible to the legislature. So the word representative मतलब हम किसी को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट करके लेके आ रहे हैं। कैसे इलेक्ट करते हैं हम? वोटिंग से। ये क्या कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, राइट? वोटिंग से इलेक्ट करके हम लेके आते हैं रिप्रेजेंटेटिव। पार्लियामेंट्री का मतलब हो गया जहाँ पर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल हो लेजिस्लेचर के लिए को, राइट? एंड डेमोक्रेसी जहाँ पर सुप्रीम पावर कौन पोजेस करे, लोग पोजेस करे। सो आई होप द वर्ड रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज क्लियर। मूविंग ऑन हियर, सो डेमोक्रेसी वी हैव डिस्कस्ड व्हाट, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। We can also find there is social democracy, जिसके बिना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो वो जो सोशल डेमोक्रेसी है उसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है इक्वालिटी, लिबर्टी और हमारा फ्रेटर्निटी। और हमारा क्या? फ्रेटर्निटी। लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट द लास्ट वर्ड दैट बट नॉट द लीस्ट, द रिपब्लिक। Talking about republic, we need to understand कि डेमोक्रेसी में दो काइंड ऑफ चीज़ें हो सकती हैं। डेमोक्रेसी में या तो एक रिपब्लिक हो सकता है, जो कि अभी हम पढ़ेंगे, है ना, और या तो दूसरी चीज़ हो सकती है क्या, मोनार्की, राइट?
सी यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज क्वीन एलिजाबेथ, राइट, एंड दिस इज आवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, Srimati Draupadi Murmu, right? Here we can see what is the difference between the two. See, both are kind of a democracy, okay? But in a monarchy, the head of state is a hereditary. ओके वो सक्सेशन से आते हैं, वो आप चूज़ नहीं करते, आप उन्हें इलेक्ट नहीं करते, वो कैसे होते हैं, हेरिडिटरी होते हैं. वो मोस्टली क्या होंगे, क्वीन या किंग ही होंगे, ठीक है. हाउएवर इन रिपब्लिक वी हैव व्हाट, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट. ओके, आइदर दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड or directly elected, that does not matter. What matters is that they are elected, right, and for a fixed period of time. So republic means that you are elected, and they are always elected in a republic. So in India our president is elected. However in Britain, ये जो monarchy का example है, this is of Britain. Okay, all right, so I hope this is clear. Let's talk about what being a republic means. Being a republic not only means that you have an elected head of a state, it also means that जो आपकी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है वो किसी एक सिंगल इंडिविजुअल में नहीं है, किसी किंग में नहीं है, क्वीन में नहीं है, वो लोगों के बीच है, ठीक है. वो किसके बीच है, लोगों के बीच है, लोगों के पास है, ठीक है, एक इंसान के पास नहीं है. और दूसरी चीज़ जो ये एंटेल करता है, दूसरी चीज़ ये बताता है, वो ये है कि जो आपका पब्लिक ऑफिस है, वो सिर्फ आप नहीं लेते हो, वो कोई भी, वो सिर्फ एक किंग और क्वीन नहीं होल्ड कर सकता, वो कोई भी होल्ड कर सकता है, किसी के पास भी कोई भी, चाहे वो कोई भी हो, राइट, एनी वन कैन हैव दिस पब्लिक ऑफिस. ओके, सो देयर इज़ नो प्रिविलेज्ड क्लास, इसका मतलब ये है कहने का, ठीक है, क्योंकि ये सबके लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आपको इसी फैमिली में बॉर्न होना पड़ेगा तो ही आप इस पब्लिक ऑफिस में पार्ट जा सकते हो, नो, ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट रिपब्लिक मीन्स. सी हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, राइट. एक छोटा सा वर्ड हमें कितनी ज़्यादा बड़ी पावर दे देता है. आई होप दिस इज़ क्लियर. So our 5 most important words we have discussed. To strengthen our concepts, let's have some practice questions, and you will have 10 seconds to read those questions and solve them, and then we'll discuss the answers. All right. First up we have, in which of the following terms in the preamble was not a part of the original constitution when it was adopted on November 26, 1949. Okay, so the question is not a part. If it is not a part, it means it was added later on. It was added in 42nd Amendment Act only, 1976, correct? So what are the 3 words that were added? We have already discussed: socialist, secular and integrity. So the answer it becomes secular. Simple. All right, next, so secular is the answer. The second question: mind of the makers of the constitution of India is reflected in which of the following? This is also UPSC PYQ, so you have 10 seconds. Right, so the mind means the essence, the philosophy, right? So the essence, the fundamental, where do we find it? The whole of the constitution, right? Reflected in which of the following? Mind kahan pe dikhta hai? It is, the answer is preamble, right? So the preamble encapsulates the fundamental principles, hopes, mirrors, hopes and ambitions of the constituent assembly. Ambitions. Hamari next question. The term republic in the preamble signifies what? Okay. So if we look at first, the political sovereignty rests with the parliament. This is not what republic means, right? Next is, India follows the principle of democratic socialism. It does follow it, but socialism is not republic, and republic being republic, right? State respects all the religions equally. This is what? This is secular, being secular, not being republic. What is being republic? Where your head of the state is elected either directly or indirectly, and it is not hereditary, right? It is not hereditary. So I hope you got all this question right, because we have just discussed it. Let's move on. And statement best reflects the concept of sovereign as enshrined in the preamble. A. The government is accountable to the people through regular elections.
B. India's law must be approved by the UN. There is no discriminatory practices based on social status. India can choose to acquire a foreign territory or cede its own territory. So the answer becomes what? That India can choose to acquire a foreign territory to cede its own or cede, right? Because we are our own boss. देखो पहला देखो, द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू पीपल थ्रू इरेगुलर इलेक्शंस. रेगुलर इलेक्शंस के थ्रू है, इसका मतलब तो वो डेमोक्रेसी है, इससे सॉवरेनिटी का कोई मतलब नहीं है. इंडिया के लॉ मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द यूएन. ऐसा है कुछ? हम अपने खुद के बॉस हैं, कोई और हमारा ऐसे अप्रूव नहीं करवाना हमें किसी से, हम खुद से अप्रूव करते हैं. देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन सोशल स्टेटस. अगेन दिस इज नॉट बीइंग सॉवरेन मीन्स, राइट? ओके, आई होप दिस इज क्लियर. These are the practice questions. I hope you have got it. Let's have a quick recap. Here we have the word sovereign. It means we are our own boss. Simple, right? So here we can cede and we can acquire foreign property. Socialism. Our brand is democratic socialism, right? And we added this word by 42nd Amendment Act. Similarly, secularism, 42nd Amendment Act. And secular means no state religion and equal respect to all religion, right? Democratic, again, power to the people, Our form is representative parliamentary democracy with social and economic democracy as well. And last but not the least, republic, where head of the state is elected, right, and not hereditary. I hope you got all this, and so stay tuned for the next video, and there we will discuss the objectives of the preamble. We will also deal with important questions such as, is preamble a part of the constitution and can you amend the preamble? These are the important questions we'll be dealing with in the next video. I hope you liked the video and found it informative. And if you like the video, please do like, share, subscribe for your weekly smart prep session with Priya. Thank you so much.